So we're talking about the interpretation clauses. Okay. So when we're talking about this interpretation clauses, we have talked that there are certain kind of things like we have understood what do we understand by the proposal and what is the how the proposal becomes a promise and how a promise becomes an agreement when the proposal is associated with with the affirmation or like the consent, then it becomes a promise. And when a promise is associated with a consideration, that becomes an agreement. And when an agreement is enforceable by the law, that becomes the contract. We have already understood this in the last class. Okay. So coming to this class, we have also in the last class, I'll just like to give you a small recap about the thing we have discussed in the last session. In the last session, we have also discussed one more thing about the communication process, like the communication, the acceptance, when it becomes complete. Okay. And we have understood through an example, like we have specifically discussed about the revocation of the proposal and the acceptance. And about the revocation, I have made you understood that when we're talking about the revocation means denying about something. For example, you are proposing me that, ma'am, do you want to buy a house from me? Then I am denying that no, beta, I just don't want to buy the house from you. Okay. So this is the revocation from my side to you, जहाँ पे मैं आप हूँ कि no, I don't want to do this or I want to do this. Okay. So this is called the revocation of the proposal. Got it? So when we're talking about this revocation, then we know that the proposal may be revoked. Yes, and there the revocation is of the two types. Okay. The first thing we have discussed the revocation of the proposal, and then we have discussed the revocation of the acceptance. And I have already given you the proper example through this, जिसके के through मैंने आप लोगों को ये चीज एक second guys. Yes, and in the last class I have given you an example. If you remember that, for example, मान लीजिए that you are proposing me that, ma'am, do you want to buy my house? Okay. So here what happens? You are the proposer who is proposing me that do I want to buy your house? Okay. So this is upon me that the proposal. What's the point of the revocation proposal? Then see, revocation means denying something. Revocation is denying of the proposal. मान लीजिए proposing me, ma'am, do you want to buy my house? Then again, you are deciding that no, I don't want to sell my house. And at that point, what you are doing, that you are again revoking your proposal. फिर से आप आके बोलते हैं कि मैम मैंने आपने सेल माई हाउस दैट आई डोंट वांट टू सेल माई हाउस राइट नाउ आई एम रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल जब तक मेरा एक्सेप्टेंस ना हो जाए मतलब the simple thing is फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे को पूछ लिया ओके मैंने बोला कि देखिए सर मैं अभी घर खरीदने के लिए तैयार नहीं हूँ मेरे को 2-3 दिन का टाइम दीजिए दिस 2 to 3 days इन दिस 2 ना बोल देती हूँ या फिर आज कंसेंट टू देन you have the capability to revoke the proposal. That means when until and unless there is the acceptance from my side, till then you have the capability to revoke the proposal which you have done to me. Clear? And coming to the revocation of the acceptance, this concept is very easy. Let's understand this, okay? For example, मान लीजिए you are proposing me that, ma'am, do you want to buy my house? Then I am telling that yes, I want to buy your house, okay? But मैंने क्या किया? That we have a communication that I should give you my consent through the postal letter, okay? मैं क्या करती हूँ? पोस्टल लेटर के थ्रू आपको मेरा जो भी कंसेंट लेटर है वो कंसेंट लेटर भेज रही हूँ बट मैंने तो भेज दिया बट उसी के अब तो मैं तैयार नहीं हूँ आई जस्ट डोंट वांट आई शुड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल मेरे को ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था तो एक्सेप्ट तो मैंने क्या किया आई अगेन सेंड यू द रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस जहां पे मैं आपको बोलती हूँ कि नहीं भैया मैं जो आपका हाँ की थी ना I just don't want to buy it now and I want to revoke the proposal. समझ रहे हो? So here what happens? First I am accepting and then I am revoking.
I'm denying, I'm telling that no, I don't want to buy it. बट वो रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस मैं कब तक कर जब तक मेरा एक्सेप्टेंस का लेटर आपके पास पहुंचना चाहिए। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स when I posted the letter to you for accepting my proposal, that will take minimum 2-3 days to reach you. बट उससे से पहले मैं अपना माइंड सेट करती हूँ कि नहीं, मेरे को मतलब वो जो प्रपोजल मैंने जो एक्सेप्ट कर लिया है, आई डोंट वांट टू बाय इट नाउ। तो मैंने क्या किया, एक स्पीड पोस्ट पे या टेलीग्राम पे दूसरा लेटर भेजा जहां पे मैंने घर खरीदने का एक्सेप्टेंस को रिवोक किया, बोला कि नहीं नहीं, मैं अब घर खरीदना नहीं चाहती हूँ। तो बात ये है कि मैं घर खरीदना चाहती हूँ, ये जो मेरा एक्सेप्टेंस है ये आपके पास पहुंचने से पहले मेरा रिवोकेशन आपके पास, दैट मीन्स आई डोंट वांट टू बाय द हाउस, दिस एक्सेप्टेंस, दिस डिनायल ऑफ द एक्सेप्टेंस शुड बी रीच नियर यू बिफोर रीचिंग द कंसेंट, कि हाँ मैं घर खरीदना, ये कंसेंट आपके पास पहुंचने से पहले, नहीं मैं घर खरीदना नहीं चाहती हूँ, ये एक्सेप्टेंस पहले आपके पास पहुंचना बहुत जरूरी होता है। समझ में आ रहा है? So this is the thing we have studied about the revocation of the proposal, revocation of the proposal and revocation of the acceptance. Okay. So coming to the next point, we have already understood under the section 8 that the acceptance must be absolute and unqualified. When we're talking about the unqualified, then we have also understood that this unqualified and adequate means that should be honest and truthful. Conflict नहीं होनी चाहिए and that should be very fair enough to accept the proposal itself. Okay. जहां पे वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। क्लियर? देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग द कंसिडरेशन। इस बात का दिस हैज बीन एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 8 एंड 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां पे ये बोला जाता है दैट द एक्सेप्टेंस शुड नॉट बी ऑलवेज बाय ओनली एक्सेप्टिंग इट, it can also be implied instead of being expressed in the written format, in the pen and paper format, or in the verbal format. For example, मैं आपका घर खरीदना, okay, that is the verbal communication has been done between you and me. और मान लीजिए कि देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी, जहां पे हम दोनों बैठ के कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं एंड वी आर लीगली असाइनिंग समथिंग, दैट इज एन एक्सप्रेस्ड वर्जन ऑफ द प्रपोजल, जहां पे हम एक दूसरे के साथ कुछ एग्रीमेंट कर रहे हैं या फिर वी आर साइनिंग समथिंग बिटवीन ईच अदर, दैट इज द एक्सप्रेस्ड वर्जन। बट अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोला जाता है कि हमेशा आपका जो एक्सेप्टेंस है वो हमेशा एक्सप्रेस्ड फॉर्म में रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इट कैन बी implied in nature. What do you understand by the implied acceptance? That means जैसे कि कल भी हमने ये बात डिस्कस किया था कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको आपने मेरे को, आप चाहते हैं कि मैं आपका घर खरीद लूं, ओके, तो आपने मुझे प्रपोजल भेजा, तो मैंने क्या किया, आपको सीधा 10 लाख रुपया भेज दिया एंड आई सेंट यू द 10 लाख ऑफ द रुपीज एंड कि इफ you are accepting this 10 lakh of the rupees, then I will consider that you agree to buy your house to me. तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने उस पैसा रख लिया, that means you accepted my terms and conditions, you accepted the consideration amount. यहाँ पे आप और मेरे बीच में कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे आप और मैं बैठ के ये डिस्कस नहीं किए कि चलो घर ऐसा है, घर वैसा है, घर बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ। द सिंपल थिंग इज कि आपने मेरी तरफ से पैसा एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब आपने मेरे को आपका घर देने को तैयार हो गए। दूसरा एग्जाम्पल समझा था, आप 10 रुपए का कोई बिस्किट लाते हो, बिस्किट के बदले आप दुकानदार को 10 रुपया, वो क्या आपको मुंह खोल के एग्रीमेंट करता है या पेन पेपर पे एग्रीमेंट करता है क्या कि हाँ 10 रुपए का ये बिस्किट मैं आपको बेच रही हूँ एंड इन रिटर्न आई एम गेटिंग द 10 रुपीज एंड हियर द एग्रीमेंट बिटवीन अस? No, nothing like that. This is very simple. आप जाते हो, सामान लाते हो, पैसा वापस देते हो एंड दैट्स इट, है ना? सो हियर दुकानदार आपसे जो पैसा एक्सेप्ट करता है, जो कंसिडरेशन एक्सेप्ट करता है, द कंसिडरेशन अमाउंट, दैट इज इटसेल्फ
and implied nature of the contract. समझ में आ रहा है? So this we have understood under the chapter 1 of the Indian Contract Act, and now we are going to study the chapter 2 of the Indian Contract Act, जहाँ पे under the chapter 2 we are going to study the contracts and who are the parties who are competent to contract, the voidable nature of the contract, and what are the valid contract. Okay, so when we are talking about the contract, we have understood that like according to the section 2H of the Indian Contract Act, हमने क्या पढ़ा था? Contract is an agreement that is enforceable by the contract. एक तरह का एग्रीमेंट होता है जो कि लीगली एनफोर्सेबल अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ. हाँ कि नहीं चुके हैं, राइट? So here when you are talking under section 10 of the Indian Contract Act, that what agreements are contract. Okay, so there are the requirement of certain conditions which need to be fulfilled to prove that that contract is a valid contract. So what are those required conditions? The first is the free consent of the parties. Second is the lawful object. Third is the lawful consideration. Okay, and fourth is the competency of the parties to enter into the contract. Okay, so पहले let's understand one by one. First thing, free consent. Free consent means there should be the consent from own. मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने कल, आप मुझे आपका घर बेचना चाहते हैं, यू वांट टू सेल योर हाउस टू मी. ओके, अगर मैं आपको घर खरीदने के लिए हाँ बोल रही हूँ, इफ आई एम एग्री दैट यस आई वांट टू बाय योर हाउस, दैट कंसेंट शुड बी आउट ऑफ द फ्री कंसेंट. मैं दिमाग से फ्रीली आपको हाँ बोलना बहुत जरूरी है. दिस शुड नॉट हैपन कि मेरे को कोई प्रेशर डाल रहा है मेरे पे, या फिर समवन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट मी, समवन इज ट्राइंग टू हैरेसिंग मी, समवन इज थ्रेटनिंग मी, एंड इन दैट फोर्स आई एम एक्सेप्टिंग योर कॉन्ट्रैक्ट. नो, दैट शुड नॉट बी द सिनेरियो. द सिनेरियो शुड बी वेरी सिंपल कि अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर रही हूँ, दैट मीन्स दैट शुड बी द फ्री कंसेंट इन नेचर. और कंसेंट फ्री होना चाहिए. दैट शुड बी आउट ऑफ ऑल द प्रेशर्स. दैट शुड बी फ्रॉम ओन विश. अब अपनी खुशी से वो कंसेंट देना बहुत जरूरी है ना? Coming to the second part, when we are talking about this contract, the second thing what we discussed, the competency of the parties. The parties who are entering into the contract, they should be competent to enter into the contract. Competency मतलब मान लीजिए the person is a bankrupt. Okay, मान लीजिए मेरे पास 2 रुपया भी नहीं है. I have been declared as bankrupt by the court of law. तो सोचिए जरा, if I am signing a contract with you to buy a house from you, तो मेरे पास पैसा आएगा कहाँ से? अगर मेरे पास खुद के खर्चा के लिए पैसा नहीं है, I have been declared as bankrupt by the court. If I am signing a contract with you that is of the 10 lakh of the rupees, तो मैं वो पैसा कहाँ से दूंगी, right? So here if you ask me, are the parties too competent to take the contract? The answer is no. Because what we understood, for the successful implementation of a contract, there must be certain criteria which need to be fulfilled. First, what I said, there should be the parties. Like first thing, that the contract cannot be signed by the one party. Like if I am one person, क्या मैं खुद के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं. मैं अपने साथ क्या ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं? बट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ द टू पर्सन. 2 लोगों का प्रेजेंस रहना बहुत जरूरी है टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट. सेकेंड एलिमेंट हमने क्या पढ़ा? फ्री कंसेंट. जहां पे योर कंसेंट टुवर्ड्स ए कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यू आर गिविंग योर कंसेंट और योर एसेंट टुवर्ड्स समथिंग. आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं ये चीज करना चाहती हूँ, या फिर हाँ मैं ये चीज खरीदना चाहती हूँ. दैट इज योर फ्री कंसेंट टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर थिंग.
Okay, and that consent should be completely free. मतलब that should not be with any pressure or coercion or undue influence. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मेरे को प्रेशर करे और किसी के प्रेशर में आके मैं आपको हाँ बोल दूं। समझ में आया? फ्री कंसेंट। तीसरा होता है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। हियर इट इंडिकेट्स दैट द पार्टीज हु आर डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू डू द कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स जैसे कि मैंने बोला कि इफ आई हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द बैंकरप्ट अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर मैं बैंकरप्ट हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, देन आई कॉम्पिटेंट टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द 10 लाख ऑफ द रुपीज। मेरे पास तो 2 रुपया भी नहीं है, तो मैं 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करूंगी? आई डोंट हैव द कॉम्पिटेंसी टू डू दैट। ओके, so here the parties who are competent to do the contract, they must follow the certain criteria. दूसरी चीज मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आई एम मेंटली अनस्टेबल, मेरा दिमागी हालत ठीक नहीं है, आई आई कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, मैं कुछ भी गलत डिसीजन ले लेती हूँ, राइट? So when we are talking about the right or wrong, or when I am mentally unstable in nature, जब मैं खुद का दिमाग ठीक ही नहीं है, तो मैं अगर किसी भी चीज के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ आपके साथ, और इफ आई एम साइनिंग एनी काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इज दैट कॉन्ट्रैक्ट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? द आंसर इज नो। बिकॉज अगर मैं खुद एक पागल हूँ, तो मैं क्या ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी? इवन इफ मान लीजिए मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट ही बोल देती हूँ, बट am I capable to think about that contract? क्या मेरा दिमाग में वो कैपेसिटी है टू थिंक दैट द डिसीजन आई एम टेकिंग अबाउट, मैं जो भी डिसीजन ले रही हूँ वो सही है या गलत है, उसको डिसाइड करने का कैपेबिलिटी क्या मेरे अंदर है ना? सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। ओके, फर्स्ट रहा, there must be the presence of more than one person. Second, there must be the competency of the parties. Third, there should be the presence of the free consent. Yes, under the competency of the parties, और एक चीज आपको बताती हूँ, ओके? जैसे कि हम competency का बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए certain kind of contracts are just restrained to do the people from outside India. For example, I am an Indian, okay? आप मान लीजिए देयर आर सर्टन काइंड ऑफ ड्रग्स, और I have just forgotten that name of that particular drugs which is banned in India, okay? जो कि इंडिया में बैन किया गया है, okay? तो actually that kind of drug can only be bought by the medical personnel or by the only the companies who are producing certain kind of drugs, okay? तो यहाँ पे अगर I am just a genuine person who is signing a contract with you to buy a particular kind of drug which is actually banned in India, जिसका लेने का ऑथेंटिसिटी मेरे को नहीं है, अगर मैं उसी काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ, इज दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड एज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? द आंसर इज नो, बिकॉज वो सामान खरीदने के लिए मेरे पास लीगल ऑथेंटिसिटी, आई एम नॉट लीगली एक्सेप्टेबल, आई एम नॉट लीगली कंपेटेबल टू डू दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज उसके लिए मेरे लीगल पावर नहीं है। क्लियर? और एक चीज, जैसे कि हम इंसान की बात समझे, if I am insane by mind, if I am bankrupt, if I am incompetent to do certain kind of contract, और एक चीज बहुत ही सिंपल चीज सोचिए, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ना, मान लीजिए मेरा दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, आई एम कैपेबल टू डू सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड आई हैव आल्सो द लीगल एनफोर्सेबल टू डू द कॉन्ट्रैक्ट, पर द प्रॉब्लम है कि आई एम इंटॉक्सिकेटेड, मैंने आई एम ड्रंक, ओके? मान लीजिए कि मैं 2 बोतल बियर, आफ्टर टेकिंग 2 bottles ऑफ द बियर, आई एम एट ए, कुछ भी चीज का समझ नहीं आ रहा है, आई एम एट ए कंडीशन ऑफ द इंटॉक्सिकेशन। उस कंडीशन पे आप क्या, एंड यू आर आस्किंग मी टू पे यू 10 लाख ऑफ द रुपीज, और यू आर आस्किंग मी टू साइन ए चेक which costs 10 lakh of the rupees. So, is it valid or authenticate? The answer is no, because it is pretty simple. Okay. For example, if I am signing a contract at the stage of my intoxication. Intoxication means I have no capability to understand or realize what exactly I am trying to do. Or I am at a condition of the intoxication when I have no power to understand what is the right thing or what is the wrong thing. And at that condition of the intoxication, if I am taking any kind of decision, then of course that decision will be considered
as a wrong decision, and that kind of contract will be void in nature. That kind of contract will be void in nature because that is not associated with my proper consent itself, right? So these are the basic needs of the contract. Okay, here we discussed about the competency of the parties. Then the next point is about lawful object and lawful consideration. These are the two most important things we need to discuss. What we understand by the lawful object? Lawful object means the thing or the contract we are signing about that must be legal, must be lawful, and must be authenticated. Okay, just one second, guys. The thing or the contract about which we are signing about that must be lawful or must be authenticate or must be legal. Okay. For example, मान लीजिए कि the house you are selling to me, आप मेरे को आपका एक घर बेच रहे हैं, but that house is already under the dispute. वहां पे आपने जो घर मेरे को बेच रहे हैं, दोनों के बीच में ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है. आप और आपके भाई के बीच उस घर को लेकर डिस्प्यूट है. लाइक फॉर एग्जाम्पल दैट हाउस इज गिवन बाय योर मदर टू लाइक टू ब्रदर्स, जहाँ पे ये घर दोनों के नाम पे एग्री है. बट आपने क्या किया, आपने मेरे को वो घर बेच दिया. तो यहाँ पे आपका जो दूसरा भाई था, हु इज ऑल्सो द को ओनर ऑफ द हाउस, उसका क्या होगा? So here the object you are selling me, is that object is a lawful object to sell? No, the answer is no. That is not a lawful object because वहां पे जो भी सामान आप बेच रहे हैं उसके लिए आपके कंसेंट के साथ और एक पर्सन का भी कंसेंट का, एंड दैट पर्सन इज योर ब्रदर, राइट? ही इज ऑल्सो द को-ओनर ऑफ द हाउस. बट आप उनको ना बता के अगर मेरे को घर बेच रहे हैं, तो देन दैट प्रॉपर्टी इज अनलॉफुल इन नेचर. That object is unlawful in nature, है ना? दूसरा चीज मान लीजिए जैसे कि we are talking about the drug selling. For example, I am signing a contract with you to buy certain kind of medicine or certain kind of drugs which is not allowed in India, जो कि इंडिया पे ऑथेंटिकेट नहीं है, अलाउड नहीं है. उसी तरह का कोई ड्रग्स लेने के लिए या फिर कोई मेडिसिन लेने के लिए मैं आपके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल सिग्नेचर. सो हियर इफ यू आस्क मी, इज द ऑब्जेक्ट इज अ लॉफुल ऑब्जेक्ट? मान लीजिए मेरा दिमागी हालात ठीक है, आई एम टोटली कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, इवन यू आर टोटली competent to do the contract. We are signing an agreement. We are doing everything as per the rules and regulations. हमने सारा चीज सही सलामत कर रहे हैं. But the point is all around coming to one question: is the object is the lawful object? जिस ड्रग्स को या जिस मेडिसिन को मैं आपसे खरीद रही हूँ या आप मेरे को बेच रहे हैं, क्या उसका बेचना लीगल इन इंडिया? द आंसर इज नो. If that is illegal in India, so even if everything is legal and authenticate, that authenticity does not mean anything. Clear? Then coming to the next point, lawful object and lawful consideration. The consideration amount must be lawful. That means if you are, for example, there is the agreement between you and me. Okay. I'm just making you understand with a simple example. What do you understand by the lawful consideration? As we have already understood, हमें already समझ चुके थे कि consideration का मतलब हमेशा पैसा ही नहीं होता. The consideration always not means money. Okay, consideration can be of different kinds, can be of different types, and consideration can be something except money, which is very very useful. है ना? So if we are talking about the consideration, मान लीजिए कि you are selling me your house, in return I am selling you my land. Okay, मतलब this is the reciprocal promise. आप मेरे को promise कर रहे हैं कि हाँ मैम मैं आपको मेरा घर देने का चाहती हूँ, और मैं आपको रेसिप्रोकल प्रॉमिस कर रही हूँ. ठीक है, अगर आप मेरे को अपना घर दे रहे हैं तो उसी के बदले मैं अपना जमीन आपके नाम कर दूंगी. सो दिस इज द रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन यू एंड मी. बट यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको जो कंसिडरेशन अमाउंट दे रही हूँ, मतलब in return of the house, I am giving you the consideration amount. What is that? That is the land. But that land is a disputed land. वो जमीन जो जमीन मैं आपको बेचने का बोल रही हूँ, वो जमीन मेरे नाम पे ही नहीं है. समझ रहे हैं आप? So if that consideration is illegal in nature, जो consideration मैं आपको दे रही हूँ वो legal authenticity नहीं है. So here, if the consideration is unlawful in nature, the whole contract
becomes unlawful also. समझ में आया? There are must be certain criteria which need to be fulfilled for the presence of the more than one parties. The second, the competency of the parties. Third, the free consent of the parties. Fourth, the lawful object, the lawful consideration. Okay. So these are the things which need to be taken care of before signing section 11 of it, who are competent to do the contract. Every person is competent to do the contract who has attained the age of majority according to the law and who is of sound mind and not disqualified from contracting by any law which is subject. तो यहाँ पहला चीज ये बोला गया है that first that person must attain the age of maturity. वो बंदा 18 साल से ज्यादा होना जरूरी है. The person who is signing the contract, that person should not be a minor. 18 साल से कम नहीं होना चाहिए. दूसरा, and the second point is sound mind. We have already discussed about this. That person should not be mad or unsound mind in nature. उसका दिमागी हालात सही होना बहुत जरूरी होता है. फर्स्ट थिंग क्या हुआ आपका पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द पार्टी. फर्स्ट थिंग that person should be capable of doing the contract. That should not be a minor. Because 18 साल से अगर आपका उम्र कम है then you are not allowed to sign a contract or you are not authenticate to approve any kind of contract. है ना? And the second condition क्या हुआ? You must be of a sound mind. आपका दिमागी हालात सही होना बहुत जरूरी है. And the third condition क्या है? Third condition है you must not be prohibited by any law to do certain kind of contract. For example, मान लीजिए if you are a foreigner, under certain India's laws, foreigners are restricted to do certain kind of specific performance of the contracts. So ऐसा नहीं होना चाहिए that if you are a foreigner and you are not allowed to do the contract, right? So अगर under the court of law, under the legal provisions, you are not competent to do the contract, then you will not be permitted to do the contract. And even if you are doing the contract, that contract will be void in nature. Clear? समझ में? Coming to the next point, what is a sound mind for the purposes of contracting? When we are talking about the definition of the sound mind for the purpose of the contracting, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस मोमेंट पे आदमी या इंसान कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, at that point of time, at that moment, the person should have sound mind in nature. उस बंदा का दिमागी हालात सही होना बहुत जरूरी है. There should not be unsoundness of the mind itself. Clear? तो यहाँ पे अगर हम साउंड माइंड की बात करें तो that is the two situations. Okay, फर्स्ट क्या बोलते हैं the person who is of usually unsound mind but occasionally of the sound of mind, and at that particular occasion when he has a sound mind, at that point that person is capable to do the contract. And when we are talking about the unsoundness of the mind of a person, for example, I am a person, I have the unsound mind in nature, like I am mad or I don't have any capability to take any kind of decisions, okay? But due to certain kind of medicines at certain point of time, for certain time period, I am capable to take certain kind of decisions. Got it? So when usually I am unsound in mind, my nature is unsoundness of the mind, but for a certain period of time, I get my soundness, I get my mental stability due to the medication effect. So in that duration of the time, जब मेरा दिमागी हालत ठीक होता है, at that moment, if I am signing any kind of contract, then that contract is called authenticate in nature, legal in nature, valid in nature. And that contract, even if I considered as a mentally unstable person, that contract is not going to invalid, because even if I am unstable, the moment or the occasion, the point I have signed the contract, I have done the agreement, at that point of time, I had my mental stability to decide what is the right or what is the wrong. Clear? The second situation क्या होता है?
फॉर एग्जाम्पल आई एम ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ ए साउंड माइंड पर्सन, अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, बट फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ द टाइम आई एम गेनिंग द अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड। मेरे को थोड़ा सा दिमागी हालत का प्रॉब्लम है फॉर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम बिगड़, तो इफ इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट, any kind of contract, that contract is a void contract. Okay, yeah. So what does it speak? If I am a person of the sound mind and I get my unsoundness of the mind for a certain period of the time, and in that particular period I am doing any kind of agreement or doing any kind of contract, then that kind of contract is void in nature. But if I am doing with the stableness of my mind, then that contract is valid in nature. But in the opposite side, even if I am a mentally unstable person, but for particular certain period of time, for the occasion of the time, I am gaining my mental stability, or I am gaining my mental sanity. एंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ओकेजन, जब मेरे दिमागी हालत ठीक होता है, तभी मैं कुछ डिसाइड करती हूँ, एग्रीमेंट साइन करती हूँ, दैट एग्रीमेंट इज वैलिड इन नेचर। उस एग्रीमेंट को वैलिड माना जाता है एंड दैट इज नॉट वॉइड इन नेचर। समझ में आया? क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, इट स्पीक्स अबाउट सेक्शन 30 एंड it defines about the consent. What does it speak? What does it speak? Two or more person are said to consent when they agree upon at the same thing at same sense. This is the very important thing to understand. Please understand it carefully. Same thing on same sense. इस बात पे एग्री हो रही है। ओके, देयर इज ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ओके, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा रही हूँ। फॉर एग्जांपल, आई सेड टू कविता दैट कविता, आई विल टेक द क्लास टुमारो एट 8। मैंने बस बोल दिया कि मैं 8 बजे क्लास ले, तो उसको क्या समझ में आया? मैम विल टेक द क्लास एट 8 PM, रात का 8 बजे मैम क्लास लेगी। बट मैंने क्या बोला, मेरा दिमाग में ये है कि हाँ, आई विल टेक द क्लास एट 8 AM, मैं सुबह 8 बजे क्लास लूंगी। सो यहाँ पे द क्वेश्चन अराइजेस, द कॉन्ट्रैक्ट वी आर डूइंग, द एग्रीमेंट वी आर डूइंग, इज इट ऑथेंटिकेट? नहीं, because I have told the particular word, that is I will take the class at 8. I have not defined specifically that I am going to take the class at 8 AM or 8 PM. मैंने सुबह का 8 या मैंने कोई स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया है। So when the question arises that 8 बजे क्लास लें, तो सुबह 8 बजे लेने, उसने आप रात का 8 बजे क्लास लें, तो here is the contract is a valid contract? Answer is no. बिकॉज यहाँ पे दोनों का जो सेंस है टू अप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट ये अलग है। मैंने सुबह का 8 बजे बोला था, उसको रात बजे समझ में आया। हियर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट क्लियर बिटवीन टू पार्टीज। सो हियर द सेम थिंग ऑन सेम सेंस, उसको जो समझ में आ रहा है मेरे को भी वही चीज समझ में आना चाहिए। अगर मैं कोई घर का बात कर रहा हूँ तो वही घर होना चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ एंड आप सोच रहे हो। अगर मैं 8 बजे का बात कर रही हूँ, अगर मैं सुबह का 8 बजे का बात कर रही हूँ, आपको भी वो चीज समझना भी, हाँ मैम सुबह का 8 बजे का ही बात कर रहे हैं। So there should be the presence of the thing which should be upon the same thing on same sense. अगर कोई चीज होता है, that should be the same thing and that should be upon the same sense. किस वो मतलब आपको समझ आना बहुत जरूरी है। एंड सेम थिंग मतलब जिस चीज के लिए मैं कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन, दैट मीन्स द थिंग आई एम डिफाइनिंग, द पर्पज ऑफ माई कॉन्ट्रैक्ट, जो मेरे दिमाग में चल रहा है ना, वो आपका दिमाग में भी चलना बहुत जरूरी है। डिड यू अंडरस्टूड दिस? Okay, so this speaks about the section 13 of the Indian Contract Act. The next part, it speaks about the free consent. Free consent must be free from the coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake. So what are these indicators? Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake. So what are those? We are going to discuss in the next class tomorrow.